Hi, Namaskar, good morning. How are you guys? I hope everyone is doing great. Today we are gonna solve question based on sets and relation. Relation, तुम लोगों वाला रिलेशन नहीं, ठीक है, मैथ वाला रिलेशन. ओके, तो सेट पे क्वेश्चंस मेंस की बात करें तो क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंटली अभी आने लगे हैं, ठीक है. तो सेट से जनरली एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आता ही है मेंस में, और रिलेशन से भी क्वेश्चन एक एक आने लगा है. और ये क्वेश्चंस जनरली इजी होते हैं इफ़ यू डन प्रैक्टिस, एंड बहुत थोड़ा सा चीज़ें याद रखना होता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंड देन यू विल एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी easily. So let's see which kind of question come in the JEE mains examination. So as you can see कि we starting from the first question, it is saying कि if A, B and C are three sets such that A intersection B is A intersection C. तो I think कि from here तो I can feel like this is highlighter and I think it ना हाईलाइट करने के बजाय तो उसको कर रहा है, ठीक है. हाँ, तो आई थिंक कि ये दो स्टेटमेंट्स आर गिवन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर इक्वल. वन कब हो सकता है? तो ऑब्जर्वेशन से आई थिंक कि आई कैन फील कि वन बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, बिकॉज इफ बी इक्वल्स टू सी देन वी वुड नो कि दे आर गोइंग टू बी इक्वल. ओके, और वैसे ही बोल सकते हैं बिकॉज इट इज़ सिंगल चॉइस क्वेश्चन है ना, एक ही बस आंसर सही होगा. तो इफ़ आई गेट वन आंसर करेक्ट तो आई डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि एनी अदर आंसर्स आर गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, in a class of 140 student, number 1 to 140, we have total 140 student whose numbering we have done, that is 1 to 140. All even numbered student take opted mathematics course. All even number student opted mathematics course. So if someone asks the number of student opted mathematics course, so I think we have student 1 2 3. Now these are the numbers of roll numbers of student up to 140. So total we have 140. So how many student have even roll numbers? So sir, those are going to be 2 4 6 8 and something, and then total number is going to be, so basically if I divide this 140 by 2, we'll get the total number of student whose roll numbers are even. So that is going to be 140 divided by 2, that is 70. So number of students opting mathematics course is going to be 70. Okay, next, the numbers whose numbers is divisible by 3, the numbers which are divisible by 3 is going to be 3 6 and so on up to 140. So I think if I divide by this is opted physics. So number of students who opted physics for P is going to be 140 divided by 3 is going to be 3 4s are 12, and then 23 6s are 18, and we'll remember. So total we'll get 46 students who are studying physics, and those whose number is divisible by 5. So those numbers whose divisible by 5 opted for chemistry. So how many such students are there whose roll number is divisible by 5? So basically 5 10 and so on. So it is going to be, if I divide 140 by 5, so if I divide 140 by 5, it is going to be 5 2s are 10, not 40, and 5 8s are 40. So we have total 28 students. Okay sir, next what? Then the number of students who did not opt for any of the 3 courses. Okay, so if we try to figure out how many student opted math, physics and chemistry, can we tell how many have opted
math and physics combined. So the number of students who would opt math and physics combined. So I know कि their roll number is going to divisible by the number. मैथ के लिए कितना है, मैथ के लिए इट शुड बी इवन नंबर एंड फिजिक्स के लिए इट शुड बी 3. तो स्टूडेंट हु आर ऑप्टिंग बोथ मैथ एंड फिजिक्स, सो देयर रोल नंबर शुड बी डिविजिबल बाय LCM of 2 and 3, that is 6. So if I divide 140 by 6, so we'll get the number. So if I try to divide, so it is going to be 6 2s are 12 and 20, so 6 3s are 18, so we'll get total 23 students. Similarly, number of students who opted physics and chemistry, so number of student who opted physics, it should be divided by 3, and number of student who opted chemistry, it should be divided by 5. So it means ki number of student who opted physics and chemistry combined, it should be divisible by both 3 and 5. So it means it should be LCM of 3 and 5, and LCM of 3 and 5 is 15. So if I divide 140 by 15, so I think it is going to be 9 times. 15 9s are 135. So okay, chalo. And again, number of students who opted chemistry and mathematics combined. So number of students who opted mathematics and chemistry is going to be, chemistry should be divisible by 5 and mathematics should be divisible by 2, so both divisible by 10. So I think it is going to be 140 divided by 10 is 14. Okay, next what, we'll try to find out number of students who opted all three, math, physics as well as chemistry. So number of students who opted all three, it means कि their roll number should be divisible by 2 3 and 5, 2 3 and 5. So it means कि it should be divisible by 30. 5 3 2 are 6 and 5 6 are 30. So if I divide by 140 by 30, so I think it is going to be 3, 0 cancel, 3 4s are 12. Now we'll get only 4 such student. Okay, so can we find out the total number of student who opted any of the 3 subject? Of course, so that is going to be number of element in number of student math or physics or chemistry, and we know कि its formula is number of student who opted math plus number of student who opted physics plus number of student who opted chemistry minus number of student who opted math and physics minus number of student who opted physics and chemistry minus number of student who opted chemistry and math plus number of student who opted all 3 subject, Okay sir, now I think you will just put the values. So it is going to be 70 plus 46 plus 28 minus 23 minus 9 minus 14 and plus 4. चलो, तो try to calculate. तो 70 plus I think first it is going to be minus 10. पहले आई थिंक यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है. तो 46 plus 4 is going to be 50 and 50 plus 70 is 120. 120 plus 28 is going to be 148 and 148 minus 148 minus यहाँ पे कर लेते हैं. तो 23 plus 9 is going to be 23 plus 9 is going to be 32 and 32 plus 14 is going to be 36 plus 46, so minus 46. So I think 10 to 102 student who has opted at least one subject, and it is asking the number of student who did not opted any of the 3 courses. So number of students who did not opted any of the 3 courses are going to be, total we have 140, and out of 140 102 has opted any of the 3 courses. So it is going to be 140 minus 102, that is going to be I think 38. So answer is 38. Which option it is? That is option number 2. Okay, चलो. Let's try to solve this question.
let S the number of non-empty subsets A of S such that the product of element in A is even. Okay, sure. Okay, sure. Okay, sure. Okay. So set S has how many element? It has 100 element. The number of non-empty subsets A of S such that the product of element in S is even. तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि प्रोडक्ट इवन कब होगा कि व्हेन वन नंबर इज इवन एंड या तो दोनों नंबर इवन हो, सारे नंबर्स इवन हो. ओके. एंड इवन कब नहीं होगा? तो प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी इवन when all of its number are going to be odd. when all of its numbers are going to be odd. कोई भी ना एक से ज़्यादा ऑड नंबर ले लो, उनको प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर्स. और इवन के केस में क्या होगा? इवन एटलीस्ट वन, एक इवन मिल गया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? इवन. सो इट मीन्स टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट सच दैट इट इज इवन, we'll find out total number of subset. we'll find out total number of subset and then I will subtract the subsets whose product of element is going to be odd. क्योंकि इवन के लिए फिर सारे केसेस निकालने पड़ेंगे. तो इवन के हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि ऑड में तो कंक्रीट है. कंक्रीट क्या है सर? कंक्रीट इट इज़ लाइक कि ऑड में क्या होना चाहिए? सारे ऑड होने चाहिए. ठीक है. बट इवन में ऐसा नहीं है. इवन में एक होगा इवन, बाकी सारे ऑड चलेंगे. दो होगा इवन, बाकी सारे ऑड चलेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीपल केसेस. तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? विल ट्राई टू फाइंड आउट. Now first subset of non empty subset. कैसे subsets लेने हैं? non empty subsets. Okay. तो the set S has how many element? The set S has 100 element. So it means कि its number of subsets are going to be 2 raised to 100. ये पढ़ा है. बट हमको क्या करना है? नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है. तो सर नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है तो सर इसमें से एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है? एवरी सेट का सबसेट होता है. तो वी हैव टू रिमूव दैट केस. ओके सर. नेक्स्ट माइनस ऑल सबसेट. ओके. तो व्हेन जस्ट थिंक अबाउट द सबसेट, व्हेन द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ऑड. What are the possibility the product is going to be odd? The product is going to be odd when all its elements are odd. When all of its elements are odd. तो इसमें कितने odd elements हैं? तो I think कि 1 to 100 will have 50 odd elements. Now 50 odd numbers. So if we have 50 odd numbers or we are making subsets of odd numbers, तो how many such possible subsets are going to be? That are going to be 2 raised to 50. And again we are talking about the non-empty, so we should subtract minus 1. So answer is going to be 2 raised to 100 minus 2 raised to 50. Minus 1 plus 1, they will cancel each other. So I think from here we will take common 2 raised to 50 and we will get 2 raised to 50 minus 1. Okay. This is going to be our answer. Such combinations are possible. So I think is there any option? I think option number 3 is the correct answer. Okay, if that is clear, then we will move to the next question. Two newspaper. Okay. Two newspapers A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population reads A and 20% read B, while 8% read both and A and B. Further 30. Okay. तो चलो पहले सब बना लेते हैं वेन डायग्राम.
Okay, so I think we will call this set A and this as set B. Okay, so it is saying that two newspaper A and B are published in this. It is known that the 25% of the city population reads A and 20% read B, while 8% read both A and B. So 8% is going to be here. And if 20% reads A and 8% or 25% ये करते हैं, तो I think 8% is already included. तो 25 minus 8 is going to be 17%. 17% reads A. And similarly, total B is 20%. Out of those, 8% is common. So it is going to be, only B is going to be 12%. Okay. Further, 30% of those who reads A but not B look into advertisement. Further 20%, further 30% of A who reads A but not B, reads A but not B. So I think it is going to be 17%. No? So 17 of 30%. Okay. They are looking into advertisement. No? Look in advertisement. ये परसेंटेज में ही बात हो रहा है, ठीक है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन परसेंटेज. ओके. एंड 40% ऑफ दोज हु रीड्स बी बट नॉट ए. तो आई थिंक कि 40% ऑफ ना 12% इज ऑन 12 अपॉन 40/100. Also look to know, while 50% of those who reads both and B, A and B, look into advertisement. 50% of those who reads both A and B, so I think it is going to be 8 of 50%. Chalo. Then the percent of the population who look into advertisement is, so I think सबको simplify कर लो. तो 17 3 होता 51/10, 5.1 and plus 12 4 is 48 divided by 4, that is 4.8, and plus so I think it is going to be 8 5 40 divided by 10 is going to be 4. So if we add them, 4 plus 4 that is 8, 8 plus 5 is 13, and 0.1 plus 0.8 is going to be 0.9. So I think the answer should be 13.9. Is there any option with 13.9? So I think the option number first. So option number first is going to be the correct answer. Okay, my boys. So it is saying set A is all real numbers x such that mod of x is less or equals to 2. If mod of x is less than 2, it means कि x is going to be less than 2 but greater than -2. greater than -2 ना, ऐसे क्वेश्चन में पता है ना कि I will think that as x minus 0 and 0 पे कर लेना, and then 2 unit right side and 2 unit on the left hand side. तो let me draw the graph on a graph. Okay, let me draw a line. In the center suppose we have 2, so set A is representing from -2 to +2. Okay, and end point is not included because it is this is okay. Sir, now what next we are talking about B. So if x minus 2, mod of x minus 2 is greater than 3, it means कि x minus 2 it should be greater or equals to 3, or x minus 2 should be less than -3. So from here I can see कि x should be greater or equals to 5, and from here x should be less or equals to -1.
तो I think कि above -1 is going to be somewhere here and 5 is going to be somewhere here. So if I say कि if it is x is less than -1, तो I think it is included, so it is going to be this side. And greater than 5, greater or equals to 5 is going to be on this way. Okay. ऐसा चलता जाएगा. चलो, तो नाउ a माइनस बी. सो a माइनस बी ना, तो a के बारे में हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं कि a इज गोइंग टू बी -2 to +2 and set b is going to be, if I take x is less than -1, so it is going to -infinite to -1, which is included from 5 to infinite. तो if I say कि a minus b, तो a minus b means from set a, which is this what color we say, purple line, purple line minus gray, जो भी. तो if I remove this, तो I think कि -1 is included, so it would be removed. तो I think कि option a minus b is going to be -1 would be excluded and up to 2. तो I don't think कि it is this, so option first is going to be wrong. And a union b, if I say कि about a union b, तो I think कि a union b is going to be -infinite to this and this going to be, so it is going to be I think कि r minus this has been excluded, so it means it should be included and this should be excluded. So option B that also does not match with our answer. And if someone say कि B minus A, so B minus A is going to be I think कि B, and if I subtract here this position, so it is going to be R minus from here -2. It should be excluded and up to 5. तो I think कि option 3 is the correct one, मुझे ऐसा लगता है. And if we try to find out their intersection, तो I think common areas from -2 to -1, -1 should be included. तो I think कि this should be also wrong. तो option number 3 is going to be the correct answer. Consider the two sets A, both the roots of x square minus are real, and B, which of the following is not true. तो I think it is also one of the easiest question. So if we know कि both of these roots are real, तो real के लिए क्या होना चाहिए? तो सर real के लिए discriminant of any quadratic should always be greater or equals to 0. So if it is greater or equals to 0, so we'll find out its discriminant. So that is going to be b square. That means कि minus of m plus 1 whole square, b square, minus 4 times 1, and the value of c is m plus 4. It should be greater or equals to 0. So by solving this, we'll get m square plus 1 plus twice of m minus 4m minus 4 is greater or equals to 0. So I think by solving this we'll get m square minus twice of m and minus 3 is greater or equals to 0. So just think about two numbers which product gives -3 and addition gives -2. So I think those two numbers are going to be -3 and +1. So from here we'll get m minus 3 and into m plus 1 greater or equals to 0. तो just by using Weyerhaeuser method, तो I think we'll get if it is greater or equals to 0, तो I think m should belongs from -infinite to -1 inclusive union 3 to infinite. Okay, and set B is given. So I think if you say again, we'll do the same process. So set A here by purple line will get mark this from -1 to 3. So I think it is included, so it should be something like this. Okay, this is set AB. And set B, if you try to draw on the same number line, it is -3
minus 3 is going to be somewhere here, which is included. minus 3 to 5, तो 5 is excluded, तो at 5 we'll say कि it is excluded. Again we'll try to do the same thing. Is their intersection is minus 3, तो I don't think so ना, intersection में बहुत सारे एरियाज आ रहे हैं, तो फर्स्ट रॉन्ग वे. b minus a, तो दिस सेट b minus a if I try to remove, तो I think we will get minus 1 2 3, minus 1 2 3, तो which is not the case. Again this is going to be wrong. And a union b, तो is it all real number, तो I think so कि if I try to find out their union we'll get all real number. अच्छा, which is not true. minus 3 to 5, the following is not true. तो a intersection is no this minus 3, तो is everything right here? m square plus 1 plus twice m minus 4 m. अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है ना, तभी तो it should be minus 16 and it would become minus 16, तो I think it is going to be minus 15. तो factors are going to be m minus 5 into m plus 3, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ना 5 और यहाँ पे minus 3 हो जाएगा. ओके ओके ओके, तो लेट मी erase this again. Okay, so first we'll take set A is it is saying from 3 minus 3 to 5, so minus 3 suppose here and 5 somewhere here. So 5 is included, so I think it should be included. It is going to be something like this, and also minus 3 is included, something like this. Okay, next what? So next is b. So in case of b we know, next is b, so it is saying कि it is minus 3 inclusive, so minus 3 would be inclusive and 5 would be exclusive. तो if we try to draw ना, तो it is going to be somewhere here. Okay, तो I think कि ना अभी हो जाएगा. ठीक है, अब a minus b के बारे में सोचता हूँ, तो a minus b, a intersection b, so common area I think it is going to be only minus 3, तो first option is going to be the correct answer ना. true है, तो we are following which is not true ना, not true, तो it means कि it should be not the correct option. And again b minus a, so if we try to do b minus a, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो I think कि we'll get b minus a, तो minus 3 I would subtract, तो it is going to be minus 3 excluding, and 5 is already excluding, तो I think कि option B is also correct. It means it is not correct for our answer. And A union B, तो I think कि A union B will it give yes R? Yes, of course it will give us R, so it is also not the correct. So A minus B, so if we try to find out A minus B, तो minus infinite to minus 3 of course, and then 5, I think here it should be 5 no? including, so it means it is incorrect, which means for our question no, which is not true, so it is going to be the correct answer. So question number 8, it is also वैसे ही है,
एक मिनट पानी पी ले। Out of all the patient in a hospital, 89% are found to be suffering from heart ailment and 98 from suffering the lung infection. तो आई थिंक कि वी नो कि आउट ऑफ all 89% are suffering from heart ailment. So suppose this is represented by NH, that is 89%. Just for example, and number of patient who is suffering from lung infection is number of element NL, that is 98%, and K percent of suffering from both, who is suffering from heart as well as lung infection, that is K percent. तो I know कि total possibilities that are going to be with suffering from heart and lung infection are going to be 100%, that is the maximum possibility is 100%. So by using the formula we can say, and this is the total numbers, so this should always be less than this number. So it means कि all this is going to be always greater. 100 is always going to be greater or equals to 89 plus 98 and minus K. Now we'll use again formula. Number of element in A union B is going to be equals to number of element in set A plus number of element in set B minus number of element in set A intersection B. So in this case it is going to be greater. ना 100% से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम ही हो सकते हैं. ओके, तो माइनस के, तो इफ आई ब्रिंग के दिस साइड, तो आई थिंक यू विल गेट द के इज गोइंग टू इक्वल्स टू 89 प्लस 98 is going to be 8 plus 9, that is going to be 8 9 17 and 9 9 is 18 and minus 100. तो आई थिंक कि के वैल्यू ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 87. दैट शुड बी द केस ओनली व्हेन दिस इज गोइंग टू बी द पॉसिबल. उससे कम में बात ही नहीं बनेगी सर. तो इन द क्वेश्चन देन के कैन नॉट बिलोंग टू द सेट. तो देख लो किसमें. तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 3. वाई सर? बिकॉज वी नो कि के इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 87 and I can't see any element which is greater or equals to 87 in the set 3 ना. set 1 में है 87 है 90 93, यहाँ पे भी 88 है 90 है, in this case 89. तो I think कि option 3 is going to be the correct answer. चलो, तो दिख रहा है यार कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस और इक्वल्स टू 8. तो हम लोग अभी पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं. नेगेटिव के लिए x एंड y नेगेटिव रख देना, तो इट डजेंट मैटर. तो आई थिंक कि इफ़ आई पुट x इक्वल्स टू 0 ना, तो एक इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स, तो वी कैन टेक 0. तो फर्स्ट 0,0 सेटिस्फाई एंड 0,1 ये भी सेटिस्फाई करेगा. 0,2 आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी 2 स्क्वायर 14 नहीं होगा. ठीक है, और क्या हो सकता है? 1,0 करेगा, हाँ. 2,0 ये भी आना चाहिए. 3,0 नहीं होगा. ठीक है, तो अगेन आई थिंक कि रिस्पेक्टिवली विल गेट ना डोमेन ऑफ आर इनवर्स. डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज बेसिकली रेंज ऑफ आर. तो वी नीड टू फाइंड आउट रेंज ऑफ आर. तो इन दिस केस अगेन पॉसिबिलिटी 0,-1, यहाँ पे -1,0, यहाँ पे -2,0. और क्या पॉसिबिलिटीज़ है? इफ़ आई पुट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, तो आई थिंक इट विल अगेन फॉलो. तो 1,1 भी होगा. तो विथ 1,1 -1,1 1,-1 -1 दीज आर द पॉसिबिलिटीज़. तो आई थिंक कि रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर ना, जो भी हमने लिखा है, दिस इज द रिलेशन आर. ठीक है, तो रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर. तो इफ आई ऑब्जर्व द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, वी आर गेटिंग 0 1 और -1 मिल रहा है. तो रेंज हो जाएगा, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी
0, -1 and +1. तो विच ऑप्शन है 0, -1 एंड +1? तो आई थिंक ये ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 हैज़ -1, 0 एंड +1. तो इट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, तो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू थिंक ऑफ नंबर्स ना, कि वहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ना सोइंग की सेटिस्फाई कर रहा है. तो फॉर एग्जांपल ना किसी एक पॉइंट ऐसा मिल गया तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे. तो ट्रांजिटिव का मतलब समझते हो, इफ़ ए कॉमा ए है ना, ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन इफ इट इज़ ट्रांजिटिव इट मीन्स कि ए शुड बी रिलेटेड विथ सी. ओके, sorry for that. Okay, so for example if I take a equals to 1 plus root 3 and b equals to 1 minus root 3. तो आई थिंक कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल गेट अ रेशनल नंबर. 1 plus 3 and plus 2 root 3, and here we'll get 1 plus 3 and minus 2 root 3. So again root 3 will cancel and we'll get a rational number. And if b is 1 minus root 3, so I think we can take c as a ना c को क्या लिख लो, तो विल 2 root 3 मीन्स ना इसका स्क्वायर लिख लो 1 by root 2. ठीक है, तो अगेन इफ आई स्क्वायर तो आई थिंक कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आल्सो गोइंग टू बी रेशनल नंबर. ठीक है, अब किसी ने बोला सर इन दोनों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आई कैन सी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1 plus 3 plus 2 root 3 एंड अगेन इसको स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 2 root 3 विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. तो इट मीन्स कि इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग ऑन एनी रियल नंबर्स. तो R1 क्या हो गया, R1 इज ट्रांजिटिव तो हट गया. ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव. एंड जस्ट थिंक अबाउट R2. तो R2 के बारे में सोचो ऐसे, it does not belongs to a rational number. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स ट्राई टू सेट. क्या हो सकता है? तो इन द सेम वे, तो इफ आई टेक a इक्वल्स टू 1 plus root 3 और b को a ले लिया है ना, और रूट 2 ले लिया, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर इरेशनल है. ठीक है, और c को क्या कर लिया, 1 minus root 3 ले लिया. तो आई थिंक कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आल्सो गोइंग टू बी रेशनल, बट व्हेन विल ऐड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इट इज़ गोइंग टू बी रेशनल ना, इट इज़ गोइंग टू बी रेशनल. तो आई थिंक कि बी है ना रिलेशन R2 इट इज़ आल्सो नॉट ट्रांजिटिव. तो आई थिंक कि R1 ना वी वुड हैव ऑप्शन नीदर R1 nor R2 is going to be transitive, no, because we can observe just for single number. Question number 11. Let R be defined from this and this defined as gx. Then the composition function f of gx. So f of gx is going to be two, and in place of x we'll put gx minus 1. So I think it is going to be twice, and gx is going to be x minus 1 by 2 divided by x minus 1. So if I multiply, it is going to 2x minus 1 divided by x minus 1 minus 1. So as we can see x equals to 1, it is going to be its domain. So it is going to be twice x minus 1 minus x plus 1 divided by x minus 1. I think it is going to be x divided by x minus 1, that is f of g of x.
ओके, सो इन इट्स डोमेन, तो ऑन टू के लिए फर्स्ट आई थिंक कि डोमेन इज R-1, तो जस्ट थिंक अबाउट इट्स रेंज, इसका रेंज कितना होगा। तो x कैन बी इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो विल गेट अ पॉजिटिव नंबर माइनस इनफाइनाइट ना, तो माइनस के लिए आई थिंक कि ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो फर्स्ट आई थिंक कि 1 और ऑन-टू के लिए ना, तो इसको डिफरेंशिएट करो f डैश x, तो f डैश z ऑफ x, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी दैट इज x-1 होल स्क्वायर, x-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1 माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी -1 डिवाइड बाय x-1 होल स्क्वायर। तो वी नो कि दिस इज पॉजिटिव and this is a negative number, so this is always decreasing, always decreasing. So if it is always decreasing, तो one thing is sure कि it is going to be 1-1 तो फिक्स हो गया। हाँ, कोई ग्राफ अगर always decreasing है तो it means except 1, तो इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 1-1 हो गया, फिक्स हो गया। ओके सर, ना अब फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर ऑन-टू एंड इन-टू के लिए कैसे चेक करेंगे, तो 1-1 तो आई थिंक कि नो फिक्स हो गया, एंड ऑन-टू इन-टू तो आई थिंक कि रेंज हैज़ बीन गिवन रेंज R है, और इसमें सोचते हैं इसका रेंज कैसे निकाल लें। तो इफ़ आई कंसिडर दिस एज y इक्वल्स टू x डिवाइड बाई x-1, तो इफ़ आई क्रॉस मल्टीप्लाई y xy माइनस y इक्वल्स टू x ना, इसको रिवर्स कर लो, तो फ्रॉम हियर x कॉमन ले लो, y-1 इज गोइंग टू बी y, तो फ्रॉम हियर x इज गोइंग टू बी y डिवाइड बाई y-1, तो आई थिंक इट्स रेंज इज गोइंग टू बी R-1 ना, 1 कभी होगा ही नहीं, एंड इन दिस केस रेंज ऑफ g f of g is going to be R, तो I don't think it is 1-1, तो it is 1-1 but not on-to, तो option number 4 is going to be correct answer. Question number 12, P and Q are at the same distance from the origin, be a relation, then the equivalence class of -1, -1, -2. तो if it is saying कि इट इज़ एट द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हाँ, जो भी पॉइंट्स होगा, ऑल दोज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी ऑन अ सर्कल, ऑल दोज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी ऑन सर्कल, ऑल दोज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी ऑन सर्कल, ठीक है, ऑल दोज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी ऑन सर्कल। Let it be 0, 0, and I on x 1, -1, 1, -1 is going to be, if this is 1 somewhere here, so if it is 1 -2, 1, so I know कि its radius it is going to be √2, it is going to be √2, so all those points are going to be I think lie on the circle, and equation of circle is going to be x² plus y² equals to √2 square, that is radius, so I think it is going to be x² plus y² equals to 2. So which option? Option number first. So we will get equivalence relation. Question number 13, इसको ट्राई करते हैं। Let A 2, 3, 4, 5 up to 30 be an equivalence relation on A cross A defined by the then the number of ordered which satisfy the equivalence with the ordered pair 4, 3. Okay. So if AD, BC and AB related, so I can write down this as A upon B equals to C upon D, yes or no? So ordered pair which 4, 3 is related, suppose 4, 3 is related with C, D. So it means कि 4/3 should equals to C by D, and C and D we can choose from
सेट ए, तो आई थिंक कि सी शुड बी मल्टीपल ऑफ 4k and D should be multiple of 3. So just observe this, how many possible values. So if I the possibilities of C is going to be 4, 8, 6, 12, 16, 20, 24 and 28. So how many possibilities for K? I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And similarly possibilities of 4 is going to be 3, 6, 9 and so on up to 30. So but we know कि 4 is going to be 3, 8 is going to be 6, 4 is going to be 9. So I think we'll have how many equivalence relation? Only 7. No, only 7. So option number first is going to be the correct answer. Question number 15. Let Z be a set of all integers. तो अगेन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? A is a circle, ना, just think about A is a circle, जिसका सेंटर क्या है 2,0 and radius is 2 and it represent all the point inside the circle, all the points in integral point, all the inside the circle. And similarly x square plus 0 no less than or equals to 0, तो radius 2 0,0 and it will represent all the points inside the circle. और similarly इसको ड्रॉ कर लेना एंड रिलेशन फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन एलिमेंट निकाल लेंगे एंड इससे कॉमन एलिमेंट निकाल लेंगे, तो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट निकाल के एंड देन विल राइट डाउन 2p. तो ट्राई करना, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट. Which of the following is not a correct relation on the set of real numbers? So again for reflexive we should know कि x should be related with the x. तो if x is becomes x, तो first I think कि 0 is less than 1 is a reflexive, I agree. ठीक है, this is also reflexive, तो नहीं first reflexive होगा, तो 0 symmetry. तो इन केस ऑफ दिस 0 आई थिंक कि रिफ्लेक्सिव इज अग्रीइंग एंड इन केस ऑफ सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक केस में क्या कर सकते हैं कि इफ़ x माइनस वाई इज लेस देन 1 मॉड ऑफ, तो आई थिंक कि y माइनस एक्स इज आल्सो गोइंग टू बी लेस देन 1, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और ए स्टेटमेंट के बारे में सोचो, if x minus y mod of x minus y is less than 1, तो for example if x is 1 mod and y is 3/2 1/2, तो result is 1/2. and if I do 1/2 minus 1, तो that is minus 1/2 and that is minus 1/2. तो minus 1/2 is not less than not ग्रेटर देन 0, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, नीदर सिमेट्रिक ना, आई थिंक कि सिमेट्रिक के बारे में सही बोल रहा है. ठीक है, एंड सिमेट्रिक वी कैन से यस, इसके बारे में सिमेट्रिक बोल सकते हो क्या ना, इसके बारे में नहीं बोल सकते, तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट आंसर. देख लेना. Question number 17. Let R1 be this and R2 be this, then N. तो अगेन ना नंबर्स के ऑर्डर पेयर बना के एंड विल ट्राई टू सॉल्व. If alpha belongs to, consider the relation R on multiple of the relation R is an equivalence relation if and only if. So these are the values we'll put and try to check if that follows or that follows the fiction. Let R be a relation from the set this and itself as that the A, P, Q, R is within the number of elements in R. So where P and Q are greater or equals to 3 are prime numbers, then the number of element in set R.
तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? तो आई थिंक कि वी नो द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 इज गोइंग टू बी 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड देन 17, 19. तो आई डोंट थिंक सो 19 के बाद कोई ज़रूरत पड़ेगा 23, बिकॉज कि P शुड P वैल्यू ऑफ P इज गोइंग टू बी 3 ना. सपोज P इक्वल्स टू 3, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ Q इज गोइंग टू बी 3, 5, 7, 9 ना अप टू 19 ना. 23 भी नहीं होगा, ठीक है. ऐसे P की सेकंड पॉसिबिलिटीज 5 हो गया, तो Q के लिए क्या पॉसिबिलिटीज रह जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 5, 7, 9 ना, 11, 13 भी नहीं होता, 65, तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 65. ऐसे फॉर P इक्वल्स टू 7, तो इफ P बिकम 7 तो Q इज गोइंग टू बी 3 हो सकता है. वैसे हम लोगों ने एक बार ले लिया, ठीक है, बट 3, 5, 7, 9 भी नहीं होगा, ठीक है. ऐसे P इक्वल्स टू 9, तो सिमिलरली विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q, और ऐसे ही सबको काउंट करके ना इसमें फाइंड आउट कर लेना. चलो क्वेश्चन नंबर 20. द फॉलोइंग रिलेशन आर फॉर सम रेशनल नंबर्स एंड टीचर्स अदर. तो अगेन कि x अपॉन y इज गोइंग टू बी w फॉर सम रेशनल नंबर्स w. तो r आई थिंक कि रेशनल नंबर w इफ बोथ x रिलेटेड विथ x, तो आई थिंक 1 इज़ अ रेशनल नंबर, और अगर x बाई y रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी रेशनल नंबर होगा. तो आई थिंक कि r इज एन एक रिलेशन, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. एंड s के बारे में सोचो, इंटीजर सो दैट q m, तो आई थिंक कि m अपॉन n इक्वल्स टू p अपॉन q ना. इसके बारे में सोचो कि इफ दे आर इक्वल ना, m एंड n इक्वल, तो आई थिंक दे आर इक्वल ना. ऐसा अभी एक किया था, ठीक है. ऑन द सेम बेसिस इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आई थिंक कि आंसर शुड बी बोथ शुड बी इक्विवेलेंस रिलेशन. देख लेना. Set A has m element, set B has n element. The total number of subsets of A is 112 more. तो total number of subsets of A is going to be 2 raised to number of element in set A, and total number of subsets of B is going to be 2 raised to number of element in B, that is n. तो it is saying कि total number of subsets of A is that is 112 more than total number of subsets of B. तो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, ठीक है, m की वैल्यूज़ पुट करके, m की वैल्यूज़ पुट करके. तो 2 raised to m माइनस 2 raised to n इज गोइंग टू बी 112. तो सोचो दो नंबर्स के बीच का गैप एंड ट्राई टू फाइंड आउट. आई थिंक कि m की वैल्यू जो होगी ना, वो क्या होना चाहिए, कम से कम आई थिंक कि 7 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है. ग्रेटर और इक्वल्स टू सेम, बिकॉज m raised to 5 is 32, m raised to 6, 2 raised to 6 is going to be 64, and 2 raised to 7 is going to be for example 2 raised to 7 is going to be कितना हो जाएगा 128. तो 128 से कितना ज़्यादा है, तो माइनस 112 करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट 16 ना. तो आई थिंक इट इज़ सेटिस्फाइंग. m इज इक्वल्स टू 7 एंड n इक्वल्स टू 4 ना, ठीक है. तो देयर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 28. The sum of all the element in the set and HCF of n. तो again some information is given. Let S then the number of element in set T, find n sum of element is not a multiple of 3. तो फिर से यार सॉल्व कर लेना, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं. The number of element in set A, तो again we'll try to solve this problem. Okay, equals to, so in this case we just need to try to solve this question. First x number line बना लिया करो. From here mod is has been written on, so we'll get 0, and second we'll get -4. So we'll just make 3 cases when x is going to be greater than 0, when x is going to be in between 0 to -4, and when x is going to be less or equals to -4.
तो वी जस्ट नीड टू मेक 3 cases and we'll try to solve and we'll find out the answers. The sum of all element is a T is a prime number, then number of element in set B union C. B union C. तो आई थिंक कि ए भी इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, सॉल्व कर लेना, आई थिंक कि हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।